फॉर्म तो नुह क्वेश्चंस आम डिस्कशन करथिले कि कौन कौन एरिया रू क्वेश्चन आसीबो एंड ओवरऑल गोटे आइडिया हमको मिली कि एजुकेशन रू केमिति आसी परिबो हमर जदि इफ देयर इज एनी वर्क एक्सपीरियंस then what types of questions will be asked related to hobbies, related to optional achievement, etc. And from education they will get a clue on the location or the region and what sort of questions will be asked from the region specific. So ये सब जिनस आमे टे briefly discuss करी छे. But ए discussion भितरु सबुठु जो अधिक important कथा हमें पूर्व क्लास रे हमें जानिले जे आमर सीआईएफ ऊपर डिपेंड करे क्वेश्चन रो वेटेज केते आसीबो एमिति नुह जे एजुकेशन रो 20% की हॉबीज रो 20% ऑप्शनल रो 10% एमिति बिल्कुल हुए नाही. आई हैव इंटरैक्टेड विथ मेनी कैंडिडेट्स जो मानकर ऑप्शनल रो भी गोटे क्वेश्चन आसीबी एंड देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव गॉट मेजॉरिटी क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शनल्स. सो जेतेबेले हमें प्रिपेयर करिबा वी हैव टू अंडरस्टैंड सीआईएफ इज the syllabus. Always keep in mind. For the interview, CIF is the syllabus. गोटे स्टूडेंट्स जदि CIF टा को थरो होई के जाउची तारो रिलेटेड जहाँ भी किछि इन्फॉर्मेशन आमे सेठी मेंशन करिबा ताकू जदि आमे वेल प्रिपेयर्ड होई के जाउचे देन डेफिनेटली सेठू क्वेश्चंस आसीबो. Now today I will start the current affairs introductory, I would say, and the current affairs I would say पूरा इंटरव्यू रो जो 20 to 30 minutes तमरो इंटरव्यू हुए it is not even not 10 to 15%. Remember, जो एंटायर तुमरो 20-25 मिनिट रो इंटरव्यू हबो 10 रु 15% अप्रोक्सीमेटली करंट अफेयर्स मे बी सी भी आसी पारे. सो तुम पई गोटे वार्निंग या जे डू नॉट ओनली डिपेंड ऑन द करंट अफेयर्स. इफ यू थिंक दैट आई हैव प्रिपेयर करंट अफेयर्स देन योर जॉब इज डन, देन दैट मीन्स इट इज रॉन्ग पर्सपेक्टिव. करंट अफेयर्स ही केवल तुमरो सिलेबस नुह. So that also brings to me another reminder to you that how much priority you should give to current affairs. How much time are you going to spend on the current affairs topics? Okay. Always remember the objective of the interview is personality test, not the knowledge test. So knowledge respective तांको clear instruction दिया जायछि that से माने knowledge specific पचारी बेरी. But how are they going to assess someone? जनकर पर्सनालिटी से माने असेसमेंट करिवे केमिति जदि से किछि प्रश्न ही पचारिबे नै. सो दैट इज अ रीजन से माने एई भली किछि प्रश्न पचारिबे जोठु असेसमेंट किछि बाहरी परिबो रिलेटेड टू पर्सनालिटी. के कैंडिडेट जने केमिति तांकर चिंताधारा केमिति से गोटे इशू को केमिति देखुचंती. ओके. सो सब बेले मन रख द जनरल स्टडी सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर सब्जेक्ट मु कहिबि जे तुमे 30-40% ही प्रायोरिटी दियो. ताठू अधिक बिल्कुल भी प्रायोरिटी दबो नाही. साधारणतः पिला कोन करंती से माने तांकर 100% के बा एटलीस्ट 80-90% टाइम यू स्पेंड ऑन द स्टडीज इवन एट द इंटरव्यू स्टेज. ओके. मेन्स स्टेज रे इट इज अंडरस्टूड बिकॉज़ अल्टीमेटली मेन्स रे तमरो हाथ रे प्रेडिक्टेबल अछि जते भलो मार्क आनिबो रैंक भी सही हिसाब रे तमरो आसीबो. बट इंटरव्यू रे जदि तमे तमरो होल जहाँ भी दिन अछि इफ यू स्पेंड 80-90% टाइम ओनली टू go through the current affairs, go through the questions of just GS or maybe optional, then probably तमे बहुत बड़ा गोटे नेग्लेक्ट करूछ. एंड मोर जति की विश्वास से माने अधिक इंटरेस्टेड थांती पर्टिकुलर गोटे टॉपिक ऊपर जोटा होची हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. जति की मु इंटरैक्ट करिछि स्टूडेंट मानक सहित हो किबा किछि जण मेंबर्स मानक हो से माने प्राइमरीली स्कूल कॉलेज रो पचारंतरी से माने ऑप्शनल रो क्वेश्चन सेते पचारंतरी से माने अधिक रो अधिक पचारते दीटा क्राइटेरिया ऊपर.
सी हूँ तुम पेज नंबर 2 ऑफ द सीआईएफ गोटे हूँ इफ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस और सेकंड हूँ तुम जो हॉबीज रो कॉलम हॉबीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एटसेट्रा दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीआईएफ मन रख मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जदि जनकर वर्क एक्सपीरियंस अच्छी बढ़िया से काम करिछि किछि वर्ष बहुत पिला थांते बहुत किछि पिलांकर न थाई पारे एंड जनकर जदि हॉबीज भी से भलिया किछिटा यूनिक अच्छी देन यू कैन एक्सपेक्ट पूरा इंटरव्यू तुम एथरे ही सर जीवो कमिंग टू दैट एबे बहुत पिलांकर वर्क फॉर एग्जांपल आई कुड सी दैट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एंगेज्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ वर्क ओके से क्षेत्र में मे बी हॉबीज भी सो थी फॉर एग्जांपल तुम्हें केवल लिखिछ रीडिंग बुक्स वाचिंग क्रिकेट वाचिंग मूवीज एगुड़ा माने कोन बहुत जेनेरिक हॉबी एथरो जर्सी कोन तुम निजे आइडिया करो से कोन क्वेश्चन पचारिबे तुम्हें जदि हॉबीज रे लिखिछ वाचिंग मूवीज या भीतर कोन क्वेश्चन हेई परिबो तुम्हें निजे आइडिया लगेई परिबो से पचारिबे जे लास्ट कोन तुम्हें मूवी देखिछ टी कहलो तुम्हें कहले एक्स वाई जेड मु एई मूवी देखिछि कोन सेटू सिखिलो स्टॉप या आगु को किछि क्वेश्चंस नाही से माने भी एते इंटरेस्टेड नुह या को हॉबीज को हमर मूवीज रिलेटेड एक्टिविटीज को किछि नहीं ओके तो तुम्हारा जदि हॉबीज बहुत जेनेरिक अछि वर्क एक्सपीरियंस मे बी नाही देन से क्वेश्चन कोड पचारिबे देन दे विल कम टू एकेडमिक्स एकेडमिक्स रो अर्थ तुम्हारा ऑप्शनल करंट अफेयर्स एंड योर एजुकेशनल बैकग्राउंड से भी तमे जदि +3 ऑनवर्ड्स रो अधिक से माने फोकस करंती गेटिंग माय पॉइंट हां ना प्रायोरिटी अगेन सेटा सीआई ऊपर डिपेंड करे वर्क एक्सपीरियंस किछ अछि 8 वर्ष अछि तो वर्क एक्सपीरियंस ऊपर अधिक फोकस करिया पड़िबो जो मानकर वर्क एक्सपीरियंस अछि से मानकु वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड अधिक क्वेश्चन पचारते बिकॉज से माने जानि छथि पिलार नॉलेज अछि मेंस क्वालिफाई करछि माने नॉलेज अछि आ ऊपर कोन मु एकेडमिक्स रे किछि क्वेश्चन पचारिबे ऑप्शनल रिलेटेड कहार सोशल कहार कोन ऑप्शनल सब ज्योग्राफी आउ कहार सोशियोलॉजी ऑप्शनल आउ पॉबैड अछि मैनेजमेंट अच्छी ओके हाँ ज्योग्राफी ऑप्शनल तो ऑप्शनल रो पूर्व जहाँ हम पाखे रेकर्ड अच्छी तुमको पर देदेवी आम पाखे जी डेटा कलेक्शन होगी को ऑप्शनल रो को से माने कौन पचार ज्योग्राफी रिलेटेड कौन क्वेश्चन सोशियोलॉजी रिलेटेड कौन क्वेश्चन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हें पारि नब क्वेश्चन गुड़ा एत डिफिकल्ट नुह ओके सोसाइटी आमर सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो मानकर अच्छी से गोटे कॉमन क्वेश्चन मु देखि पचारती व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सोशल इश्यूज अकॉर्डिंग टू यू इन आवर कंट्री किमा सोशियोलॉजी रे से माने आ गोटे भी क्वेश्चन पचारछंती हमर जो सुसाइड रिलेटेड कार सोशियोलॉजी ऑप्शनल तुमर बोधे ना सुसाइड रिलेटेड जने थिंकर कहिसंती डरखाइम से डायरेक्टली पचारती कि डरखाइम को विषय रे कुह तांको विषय तुम कौन जानिछो किबा पचार देबे कि डरखाइम जो सुसाइड विषय कहिसंती डू लेट मी नो तो आई फील दैट एगुड़ा तुमको एते डिफिकल्ट हबनी बिल्कुल भी तुम्हें पढ़िछो ऑप्शनल एते वर्ष लाइन पाठ पढ़िछो डेफिनेटली जीवा पूर्व यू विल बी एबल टू रिवाइज सो मु तुमको या कहया पे चाहूची सीआईएफ होची तुमरो 360 डिग्री तुमको या बुझिया पड़िबो जे काहा को मु केते प्रायोरिटी देबी केवल जे करंट अफेयर्स मु 80-90% फोकस करिवे एंड all of the questions will be coming from the current affairs. That is a wrong perception. Okay, if you have good work experience, if you have good hobbies, my assessment will be 50-60% of your time should be invested here. 50-60% of time, and I can guarantee कि जदि तुम वर्क एक्सपीरियंस अच्छी आ हॉबीज अच्छी भलो ताहले तुम वेल प्रिपेयर होगी जाओ. प्लीज कम. ओके, गोटे छोट एग्जांपल दूची 2000 OCS तुम 2023 दब ना OCS 2021 रो इंटरव्यू रे गोटे टॉपर ऑलरेडी हेइचंती एकेडमी रो सीए तांकू गोटे प्रश्न पचारि गला सी हॉबीज रे लिखिथिले गोटे जिंस हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर कॉलम रे गोटे पॉइंट लिखिथिले जे एन्जॉय टू प्ले विथ माय चाइल्ड. पुरुष जन मेल कैंडिडेट से लिखिथिले कोन एन्जॉय टू प्ले विथ माय चाइल्ड.
निज छुआ सहित खेलिबा पय बहुत पसंद करते से गोटे ही हॉबी लिखिथिले आ गोटे कोन कुकिंग ना एमति कोन गोटे लिखिथिले सीए जति कि मते कहिले माने तांकर इंटरव्यू रो 70% 80% केवल सेही रिलेटेड ही जाईछि कोन पय तमे निजे चिंता करो मैक्सिमम सीआईएफ से माने जहा देखिथिबे क्रिकेट कुकिंग गार्डनिंग हां रनिंग जिमिंग एगुडा बहुत जेनेरिक जिंस गुडा थाए वाचिंग मूवी रीडिंग बुक्स बट एते सब इंटरव्यू भितरे तांकर गोटे यूनिक पळे आसला कि ना प्लेइंग विथ द चाइल्ड इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी तांको पचारले कि इज इट योर हॉबी से कहले हां यस इट इज माय हॉबी मोर गोटे 1.5 वर्षर छुआ अछि मु जेतेबेले मते मु टाइम मिले मु ता सहित खेले मते बहुत भल लागे सो सेटा गोटे कोन हला गोटे पॉजिटिव एटमॉस्फियर क्रिएट हला सो इमिति भाबनी जे ना एटा हॉबी हेई परिबोनी एटा तुमर दायित्व कि हाउ कैन यू मेक वन इंसिडेंट एज एन हॉबी गेट माय पॉइंट if you have certain things which is unique in nature do not afraid जेमति playing with kids probably तमे टिके हेजिटेट करियो जे आकु गोटे कोन मु पकेबी हॉबी रे बट तांको बहुत बढ़िया इंप्रेशन मिलला सीए ओआरएस पाइथिले 2021 रे ओके ट्राई करो जहां भी किछि अछि तुम मानकर हॉबी आमे परे नले डिस्कशन करिबा हॉबीज जेतोला आमे क्लास नबा दैट टाइम वी विल डिस्कस सो टुडे we will start with current affairs linked with static because there is not a single current affairs which is not linked with static topic always current affairs has to be linked with static topic okay now students in interview generally कौन हुए देखो they will first question remember will be mostly on what or mostly on your opinion remember मु तुमको गोटे सिंपल टेम्पलेट दोछि केमिति हुए जिंस गुडा इंटरव्यू रे I will also give you few examples any question that is based on academic it is also applicable to the academic related question academic means your subject related maybe your college subject or optional subject or current affairs anything that is I am combining as academic so first question the first statement of the question will be related to what or your opinion okay or maybe do you know this opinion means what do you think get my point why this type of question because this type of questions are generally considered as conversation starter for example I entered into the class directly मु जदी टॉपिक को पळे आसी मे बी आमे गोटे कनेक्ट करि परिबानी सो स्टार्टिंग रो मे बी आमे वी ग्रीट ईच अदर और प्रोबेबली कोन हेतिला आमे डिस्कशन करथिले आज रो दिन केमती अछि सो यू नीड समथिंग टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन इंटरव्यू रे भी एग्जैक्टली सिया हुए कोनोसी भी टॉपिक थीम हो so they will ask certain questions which are very simple in nature you will be able to answer but what is most difficult is question number 2 or the second question which is generally known as follow up question remember this is the pattern first they will ask the question and second questions will be primarily follow up question and follow up questions is to assess your intelligence or the logical follow up questions are primarily based on why okay it is based on why ये पैटर्न बुझी गलो पैटर्न कोन तुमको कोनोसी भी टॉपिक आई विल गिव यू फ्यू एग्जांपल्स आल्सो आज डिस्कस करिबा किछिटा जनरली सो दैट तुम आईडिया आसी जिवो से गोटे क्लास रे सब जिंस डिस्कस करिया पॉसिबल नुह किंतु मु तुम मानको एतिक एम्पावर कर देबे आई कैन गाइड यू दैट मच कि ऑन योर ओन आल्सो यू कैन प्रिपेयर मेनी थिंग्स सो फर्स्ट जिंस हम कोन जानले कोनोसी भी टॉपिक रो से माने जेतबेले स्टार्ट करंती
what. Next follow-up question will be most critical to analyze your base of understanding. How do you react? What is your aptitude? 80 check हुए. But there they need something to start. तो से माने पचारिबो what रू पचारिबे. Okay. Let us take an example. गोटे रियल एग्जांपल नबा ताकू आमे बुझिया पे ट्राई करिवा. आज रही न्यूज़ पेपर मु नउची गोटे एग्जांपल. सपोज लेट्स से इंडियन एक्सप्रेस रो. Okay. See, one of the most important and crucial गोटे डिबेट चली. Why? Because Bihar रे elections आगो को हबार अछि. Now tell me, all of you are updated with current affairs. कौन सब करूचो current affairs पे? Are you going through some newspaper or magazine? कौन कौन करूचो? कौन सब newspaper पढुचो? हिंदू. Okay. आउ Indian Express. How? What else? How many newspaper do you read? One newspaper. Hindu and Samaj. Only Hindu. Okay. How is it? Any magazine do you follow? Kichi magazine supplement करूचो? केबे केबे. Newspaper do you read regular basis? Every day? What do you do? Do you make notes? Yes. Online students, you can also interact with me. In addition to that, one online channel. Okay. Avinash, Bhagyasri, Sanjukta, there are many students. तो मैंने भी comment करी परिबा. Okay. Now let me tell you the sources. First of all, एटा को settle कर दवा. For interview, I believe that at least you should pick one national level newspaper, one state level newspaper, at least. Okay. If possible, you can supplement, let me tell, with editorial. Example, let's say you pick up the Hindu newspaper. The Indian Express will be editorial as good as the Hindu. So you don't need to read both the newspaper. Kintu for the editorial, I would recommend you should read the Hindu as well as the Indian Express. That is my recommendation for the editorial only. Because interview रे आमे जहाँ discussion करूचे what then how do you answer ए सब जो perspective गुड़ा you can only get in the editorial. तुम्हें front page रे गुड़ा सब किसी मिली बनी. Indian Express रे गोटे paper भी आसे explained बोली गोटे paper आसे सेटा भी बहुत important था. Okay, national level रे तुम्हें कोनो सी भी गोटे you pick any newspaper but for the editorial purpose just go through the both the newspaper Indian Express as well as Hindu. State level newspaper, anything would do. The Samaj or the Sambad would do, no problem. Odisha Post is also one of the good thing. Those who are fluent in English, I will recommend go for Odisha Post. जो मैंने भावुछ कि ओडिया रे तमे टिके टिके इंटरव्यू रे सप्लीमेंट करिवो, then also you should read the Samaj. I personally find Samaj is good newspaper. संवाद रे टिके किछि किछि जिंस बढ़ई चढ़ी के लिखा है बट समाज मते टिके सोबर लागे एज पर द सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू जति हम देखिबा तुमको अधिक इनफॉरमेशन न मिली पारे बट सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू जहां दरकार यू विल बी गेटिंग. ओके, नाउ या सहित व्हाट एल्स कैन यू डू स्पेशली इन इंटरव्यू. व्हाट इज मोस्ट इंपोर्टेंट आई वुड से दि तीनटा जिंस अछि इफ यू कैन डू इट बहुत एडवांटेज हबो. गोटे होची योजना आ गोटे होची कुरुक्षेत्र आ गोटे होची ईपीडब्ल्यू. I am not recommending to read thoroughly, but if you can get gist summary type of
प्रत्येकटा इश्यूर समरी योजना कुरुक्षेत्र एंड ईपीडब्ल्यू तुमर करंट अफेयर्स आउ कुआडे तुमको देखिया पड़ोनी जिस्ट कि समरी टी तुमको दरकार बस बिकॉज गवर्नमेंट रो जो पर्सपेक्टिव गुड़ा दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू and they are the civil servants, so they are looking answers like civil servant. मु कहटा बुझी परछो से माने गोटे गोटे जेनेरिक आंसर टू सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू जो गोटे आंसर थिबा दरकार से लैंग्वेज जो थिबा दरकार दे आर एक्सपेक्टिंग दैट एंड सेगुडा तमे सेठी ही पाइबो योजना कुरुक्षेत्र ईपीडब्ल्यू मे बी इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू रे भी तमे न पाई पारो किछि किछि जिंस मोटे छोट एग्जांपल देबी हिंदू रे मोस्टली मु पाइछि टिके सोशलिस्टिक अधिक मु पाइछि हिंदू रे इंडियन एक्सप्रेस तो ठीक ठाक अछि मते टिके बैलेंस लागे कंपेयर टू हिंदू बट हिंदू मते टिके इंक्लिनेशन लागे अधिक एंड दैट इज ओके आई थिंक न्यूज़पेपर रो मु कहिबी जे मेन फाउंडेशन होची टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट जदि से माने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज न करिवे त डेमोक्रेसी बढ़िबो केमती बेटर होबो केमती प्रेशर क्रिएट करबा होची न्यूज़ रो काम ठीक कामटा देखेबा होची न्यूज़ रो काम दैट इज फाइन बट तुम्हें जो एज ए सिविल सर्वेंट व्हेन यू are expected to give certain answers that also needs a meticulous way to present that information so that you don't be so vocal and at the same time you should not use certain words which are extreme in nature let me give you another example भारत एवं पाकिस्तान रे जो आमे कहूचे वार चली हैव यू एवर सीन एनी काइंड ऑफ स्टेटमेंट बाय एमईए दे हैव एड्रेस्ड इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एज अ वार देखिछ बट ऑल द न्यूज मीडिया चैनल्स एंड एटसेट्रा से तो कहले आमे इस्लामाबाद भी नहीं जाइछु दैट इज अ सेपरेट थिंग किंतु एमईए रो स्टेटमेंट देखिबो किबा फॉर एग्जांपल कोन से स्टेट स्पोक्स पर्सन रो जदी स्टेटमेंट देखिबो कोठी भी वार शब्द रो यूज करा हेनी सेठी कोन यूज करा है एस्केलेशन there is an escalation between India and Pakistan there is a conflict between India and Pakistan वार शब्द यूज करा हेनी बिकॉज वार शब्द यूज करिवार गोटे प्रोसेस अछि कहया गले दैट तो गोटे इनविजिबल वार भी बिना वार शब्द डिक्लेयर करिकि इट इज अ काइंड ऑफ वार आल्सो बट नॉट ऑफिशियल सेतबळे हुए जेतबळे गवर्नमेंट डिक्लेयर करे आ गवर्नमेंट डिक्लेयर करिवार प्रोसेस अछि कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बसिबे प्रेसिडेंट करे अप्रूवल हबो देन वार डिक्लेयर करिवा पई पार्लियामेंट रो भी सेठी तांकू प्रेजेंट करिवा को पड़िबो नॉर्मल या होची प्रोसीजर ऑल्दो इट इज नॉट मैंडेटरी बट इट इज अ प्रोसीजर so for example in the interview they ask you a question if you are the authority they can ask a hypothetical question also last year they asked one candidate if you are a prime minister of this country pacharthile purbo thara what actions would you take related to education na imti kichi gote specific thila so regarding this operation Sindoor if they ask you simple question that if you are the let's say authority to decide the ceasefire or not what actions would you take will you resort to ceasefire or will you continue to strike against Pakistan कौन कहबो तमे what is your opinion better how do you respond to the question I am looking for that answer ki कहबे try करो ठीक है see this class will be more interacting एटा या न हो जे मु केवल कहबी it is not a one way traffic okay both way हेले better होबो interaction जते करिवो तमे पर्सपेक्टिव ता जानि परिबो online students please तुमे माने समस्ते you can kindly I would request you हाँ
Again, wrong starting. Because they are asking your opinion. You should not mention about the comment. Huh. Hmm. 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 Yes, please. Hmm. Hmm. Yes. Try karo, try karo. It's okay. We are here all to learn together. It's okay. Try karo. But answer टा केमिति दबो? Question तो मु पचारली. If you are in the position, what will be your decision? How do you respond? It is also current affairs. It is also situation based. Okay, ଏମିତି ଭାବନି ଯେ current affairs ମାନେ ତମକୁ ପଚାରି ଯେ what is the recent rank in global hunger index of India. ଭାବନି ଏଇ type ର question ଆସିବ. Question will be always based on a perspective. Then they will ask you why. Follow up question. As far as Operation Sindoor is concerned, India's target, India's intention is to target the terrorists, not the civilian. And also the state sponsors of Pakistan behind the terrorist attack. Government is trying to address the terrorist activities in the land of Pakistan rather than the state. Okay. Still did not address the answer. Anyways, try करଛ बहुत भलो को. It is important that you take stock of the situation, both from the international point of view, from the national point of view, from the military and state security point of view. Given all that point being taken care of, I would advocate that war is definitely not the solution, but a message of deterrence needs to be sent. So even though a ceasefire is evident that it should be done, but I would ensure that the message is being sent through economic sanctions and anything else? See, there are, let me help you out so that tame next question kahi paribo. There are many ways to answer this question. I would always say that do not give too much of context. बहुत context दबा दरकार नहीं, background बहुत दबा दरकार नहीं, because जेहेतु से माने पचारुचंदी, they also know the background, you also know the background, so they are expecting you to answer in a very brief way. So either तमे directly answer को आसी परिबो, or else you can give a little bit of anecdote also. For example, there is a saying, king should always avoid war, but must be always ready for it. King, जने राजा सबु बले war को avoid करिवा दरकार, but सबु बले ready रहिवा दरकार. एई भली छोटो इये रे भी तमे स्टार्ट करि परिबो. बेसिकली एटा जे एक्सैगरेशन बहु होनी, शॉर्ट एनेक्डोट टू मेक यू द फ्रेम कि तमे कोन एक्जेक्टली कहया पे चाहौ छ. A king should always avoid the war, but must always be ready for it. Then you can give few answers. As a logical personalities, what you can do, you can say that if I am in a situation, first I will assess the situation from different point of view. Since India is focusing more on the economical development, we also understand that prolonged war is going to cost heavily on us. Okay, do not know, we no need to mention the Pakistan. तांकर कौन हो जी न हो जी आमर कौन जाऊँ, but आमर कौन हो जी सेटा आमो को matter करे. So the prolonged war is going to cost us heavily. So the kind of growth rate which we have accumulated in this decade, if we indulge in war, then we may go back to, let's say, 2 to 3 decades before. However, not doing strikes also culminates to a sign of weakness. We must affirm on our determinations for self
defense. If there is a need, we must strike so that the enemy state must not consider us as a weak nation. It's a very balanced approach. तुम एटा कहून जे मु वार को सपोर्ट करूची, तुम एटा भी कहून जे मु वार को सपोर्ट करूनी. तुम सिंपली एया कहूच. मु प्रथमे टिके सिचुएशन देखिबी. अब भारतर मेन ऑब्जेक्टिव अगेन टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सेकेंडरी. आमर मेन ऑब्जेक्टिव होची इकोनॉमिक ग्रोथ. आमी तो वार चाहूने. पाकिस्तान में कौन होची कौन हमको किसी फरक भी पड़ेनी. आमे चाहूची तुम्हें हमको छाड़ी दिया एकुटिया, आमे हमर इकोनॉमिकल ग्रोथ करिवो. बट इट इज यू केम इनटू माय टेरिटरी एंड डिड सर्टेन एक्टिविटीज. जदि मु साइलेंट वर्तमान रही जीवी, देन वर्ल्ड को देखा जाउची जे भारत वीक, भारत पाखरे पावर नाही. ओके, जदि मु पागल को भलिया तम ऊपर स्ट्राइक करिवि, ताले मु निज गोड़ ऊपर भी हिं कुराडी मारुची. ऑल्दो मु वार तो जीती जीवी, इंडिया विल डेफिनेटली विन द वॉर. बट अल्टीमेटली कौन होबा हमरो, आमे जो प्रोग्रेस, हमर जो ग्रोथ रेट अछि, हमर जो फोकस चली कि नहीं आमे इकोनॉमिकली केमती गोटे सुपर पावर होबा. $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो यू कैन आल्सो कोट. सेटा केबे अचीव हेई परिबने जदि आमे वॉर स्टार्ट कर दबा. एबे पॉइंट तो तार अर्थ तमे ना हां करूछ मु सीज फायर पे रेडी अछि, ना तमे नाइ करूछ मु सीज फायर पे रेडी नाही. तुमे कहूछ बेस्ड ऑन द सिचुएशन. इफ देयर इज अ नीड, एवरीथिंग इज गोस फाइन, लेट अस डू द सीज फायर. जदि लागुची दैट ना एनिमी स्टेट इज नॉट लुकिंग एट दैट पर्सपेक्टिव, देन हिट हार्ड. सिंपल. सो इट इज अ बैलेंस अप्रोच. से माने डेफिनेटली तुमको इंस्टिगेट करबा पई ट्राई करिवे. दे विल ट्राई टू इंस्टिगेट कि व्हाई डोंट यू स्ट्राइक, तुम हाथ रे तो एडवांटेज थिला, व्हाई डोंट यू स्ट्राइक. से माने तम मुहर कथा बाहर करिया पे चाहउछन्ती. से माने तम मुहर चाहउछन जे यू शो दैट बायसनेस. And that is where it is important to maintain the unbiased logical thinking. Clear point? Okay. Now this is yes. No, but आमे डिनाई भी तो करिने, आमे वार करिवनी बोली. आमे कहिसे आमे रेडी रहिबा. सेति में मु जो एनेक्डोट टिके देली. हां. हां. Yes. गोटे कथारे अछि ताको कोन कहा जाय. ना देयर इज अ गोटे थ्योरी अछि, याको कोन कहा जाय, मो माइंड स्किप होछि. मो माइंड को असम कहिबी. सो certain actions has peripheral reactions. आमे जेतोल किछ गोटे काम करू तार पेरिफेरियल रिएक्शंस आसे. सो वी शुड नॉट कंसर्न द चाणक्य नीति आल्सो, जो पीएसआर ऑप्शनल थे प्रोबब्ली जानि छथि. सो कोन तो कहंती इज ना बटरफ्लाई इफेक्ट नो, इट्स रिलेटेड इकोनॉमी. माइंड स्किप होची. ओके, आई विल टेल यू मोर जेतोल मने पडिवो. हां, ना गोटे थ्योरी अछि स्पेसिफिकली ताको. हां, कोलैटरल डैमेज. You tell that phenomenon as collateral damage. बुझी पाछो. तो sometimes कौन हुए हमरो टारगेट जेतोले हम हिट करू, we always try to minimize the collateral damage, but we cannot neglect the collateral damage. If we are too much concerned on collateral damage, then we cannot hit the aim. Civilian population हमें always try करिबा जे केते minimize हेई परिबो, बट आमे ग्यारंटी देई परिबने जे जीरो हबो. सिविलियन जीरो हेल तारे बहुत भलो कथा. यस, राइट. That is all war strategy. ये गोटे इमिडिया डिस्कशन ना को तमे आई थिंक वर्ष सारा डिस्कस करियो सॉरी बोली. देयर आर मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल कॉन्स्पिरेशंस मु कहिबी. लाइक you should always speak the voice of the authority मु कहिबी. ओके, अथॉरिटी कोन कहिचंती, दिस इज आल्सो एन लाइव लैब फॉर चाइना टू एक्सपेरिमेंट देयर वेपन्स. भारत पाकिस्तान गोटे लैबोरेटरी हैला चाइना पई कि तांकर वेपन सिस्टम केते स्ट्रांग अछि. सो इट इज अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन. हाँ, मुझे आई थिंक फर्स्ट ना सेकंड क्लास रे भी कही थी, यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड हाउ डू यू कंट्रोल योरसेल्फ.
एमिति नुह जे तमे गोटे इमोशनल रे बही जाई कि बहुत किछि कथा कहि दियो जोटा कि तमे कंट्रोल करि परिबोनी. एंड ऑलवेज रिमेंबर चूज द वर्ड केयरफुली बिकॉज इफ यू एंटर इनटू अ डिफरेंट टेरिटरी माने एमती किछि जदि तमे स्टेटमेंट कहि दियो जहार कि तम पाखरे किछि आइडिया ही नाही देन फॉलो अप क्वेश्चन तमे हैंडल करि परिबोनी. आ सेमाने कोन थांती सेमाने समटाइम्स दे विल लिसन समटाइम्स दे विल एब्रप्टली स्टॉप यू. ओके ओके ठीक है छाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन एई टाइप रे हबो. सो तम माइंड थिबो कि मु तो कहूतली मते मौका ही देउ नहांती कहया पे मते रोकी दउचंती. सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड तुमन को सेति के हैंडल करिया पड़ियो जिंस. एनीवेज वी अंडरस्टूड द सोर्स. दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट. या सहित आई विल आल्सो शो यू सर्टेन थिंग्स especially हमरो if we talk about Odisha specific जदि मु कहिबी for Odisha specific you can refer without any doubt amaro nijero magazine Drustikon magazine. It is highly recommended by many of the toppers. Okay, so free of cost it is available in our application. You can download it and I would expect that last 6 months, I think since January would be sufficient. Do not go beyond January, that is not necessary. So for example, let me just show you the index page. This one, Odisha exclusive current affairs. Okay, so these are the very simple to the point clips. You can just go through it. आराम से तुम इंटरव्यू पाई याकू गोटे तुम्हें रिलाय हेकी जाई परिबो. बेसी भी नुह अप्रोक्सीमेटली 40 पेज खंडे थाए ओडिशा स्पेसिफिक करंट अफेयर्स. एथरे नेशनल करंट अफेयर्स भी अछि. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी अदर सोर्सेज यू कैन आल्सो रेफर. जदि तुमर ऑलरेडी किछि सोर्स अछि मु कहिबी जे तुमको स्विच करिया दरकार नाही. जो सोर्स रे तुमे सैटिस्फाई अछो तुमे सेही सोर्स को फॉलो करो. किंतु ओडिशा रे जेहेतु मु कॉन्फिडेंट अछि 100% जे अलगा कोनोसी इंस्टीट्यूट सेमति नाहादे जे कि डेडिकेटेड ओडिशा रो सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू. जीके तो तुमको मिल जिवो बहुत किछि इंटरनेट रे भी तुम जीके पॉइंट ऑफ व्यू किछि भी पाई जिवो. बट सिविल सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू गोटे जिंस जो दरकार आई डोंट थिंक सेमति किछि मु नजर ते पसंद आसीनी. सो तुमे याको आराम से रिलाय हे कि तुमे कोन करि परिबो पढ़ी परिबो. बहुत शॉर्ट रे भी लिखा है छि सिंपल वे रे लिखा है छि तुमे आराम से देखि परिबो. हाँ एठी आ गोटे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट रिपोर्ट एंड इंडिसेस गोटे ही करंट अफेयर्स मैगजीन रे तुमे सब किछि पाइबो. रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कोऑपरेटिव बारोमीटर 2025 रिपोर्ट एंड इंडिसेस टा इंपोर्टेंट हबो तुम समस्त को पाई. ओके पर्सनालिटीज अवार्ड एंड इवेंट्स इज आल्सो देयर. जस्ट गो थ्रू इट. ओके जे तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दरकार डेफिनेटली लुक एट दिस. फॉर एग्जांपल ओडिशा से एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स एटा होची हमर जेतबळे प्रवासी भारतीय दिवस हेतिला सेही समय रे कनाडान खालिस्तान तुमे कहि परिबो नॉन स्टेट एक्टर मिस्टर पन्नू नुह के सीए हमको थ्रेटन देइथिले गोटे ईमेल भी पठेइथिले किछि. तो तार रिलेटेड सिंपल न्यूज हेछि बैकग्राउंड कोन हैला एनालिसिस हमें कोन कोन करले सिक्योरिटी रेस्पॉन्स कोन हैला चैलेंजेस कोन कोन अछि देन ब्रीफली व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. तो करंट अफेयर्स बहुत माने टू दी पॉइंट अछि सिंपल लैंग्वेज एते हाईफाई लैंग्वेज भी नुह तुम माने को पढ़ी कि तुमको भल लागिवो. आ गोटे होछि फॉर एग्जांपल तुम समस्या जनवरी मासरे आलू रिलेटेड बहुत गोटे समस्या हेतिला. वेस्ट बंगाल कहला जे हमें दबुनी आलू लास्ट को आमे कहले जे ठीक अछि तुम जदि दबनी हमें मध्य प्रदेश ना कोठो कोठो नेकी आसी यूपी मध्य प्रदेश रो नेकी आसीउ. आम लोक कहले जे ताकर आलू हमको टेस्ट लागुनी भल लागुनी ना. सो सी गोटे स्टोरी अछि हेटी तुम याकू पढ़ी परिबो. केवल ए गोटे नुह दिस विभिन्न प्रकार जनवरी रहिला फेब्रुआरी रो करंट अफेयर्स मैगजीन अछि. ओके सेमिति मार्च एप्रिल मे एबे जून ऑलरेडी रिलीज होबो किछि दिन भितरे. सो याकू तुम डाउनलोड करिकि पढ़ी परिबो. को जनवरी एक्सेसिबल नाही नाही माने बुझी पाले. हाँ इज इट सो फॉर एग्जांपल हमर वेबसाइट जोटा ऑनलाइन RAYACADEMY भूल कर देली बोधे स्पेलिंग भूल गेला ना.
Resource रे current affairs monthly हाँ अच्छी तो अच्छी जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल मे जून टा अपलोड होबो आराम से तुम डाउनलोड करि परिबा को हाँ ठीक अछि सो ओडिशा करंट अफेयर्स में बिल्कुल तुमको किछि भी देखिया दरकार नै याकू रिलाय करिवो आ गोटे सोर्स मु कहि दउची ओडिशा रिलेटेड डेटा पाई गोटे ही सोर्स मु तुमको कहिबी से होची ऑफिशियल वेबसाइट कौन कौन ऑफिशियल वेबसाइट जहार जो डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड अच्छी से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेबसाइट ओपन करिवो से भीतर जहाँ डेटा अच्छी सेकंड जिनस ओडिशा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजेट जदि तुम सेतिक भी पारुन आमर निजर करंट अफेयर्स मु कहबी जे हमर गोटे डॉक्यूमेंट तुमर जो आईजीपी रे एसेंशियल गाइड अछि सेठी भी ओडिशा रिलेटेड डेटा अछि इफ यू कैनॉट फाइंड आउट देन एठी तुमे जो एप्लीकेशन ऑलरेडी थिबो द एसेंशियल गाइड बुक इंटरव्यू पई आई थिंक लास्ट टू बिफोर चैप्टर इज ऑल अबाउट ओडिशा रिलेटेड डेटा हाँ हाँ पारिबो ब्रीफ तुम समरी एग्जीक्यूटिव समरी खाली पढ़ो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िया दरकार नहीं ओके नाउ सिंस वी अंडरस्टूड लेट अस टॉक अबाउट दिस वन जो हमें डिस्कस करूले व्हाट देन द फॉलो क्वेश्चन व्हाई टेल मी हैव यू रीड दिस टुडेस न्यूज़पेपर आज पढ़िछो आज न्यूज़पेपर एनीवेज बट आई थिंक काली भी ना परदिन भी आस्तिला रिलेटेड टू दिस anyways this related to joint poll constitutional says ex-CGI's question sweeping powers to the election commission in bill basically गोटे कमिटी गठन करा जायछि point to some provisions in one nation one election bill which could lead to legal challenges चारि जण ex CGI chief justice of India former chief justice also हमरो just immediate former जे थिले election power to delay simultaneous elections may not pass muster कहबार अर्थ होची फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस जेएस खेर आउ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ who appeared Friday before joint committee of parliament on the one nation one election bill are learned to have said that the bill does not violate the basic structure of the constitution but there are so many loopholes ये होची context okay now question कोन आसीबो first question that will come से माने तुमको कंफर्ट करिया पे पचारिबे हैव यू हर्ड अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन यस सर तुमर आंसर तो फर्स्ट यस सर व्हाट इज इट बुझी परछ तो क्वेश्चन एमिति हुए हैव यू हर्ड अबाउट वन नेशन वन डू यू नो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन यस आई नो कैन यू टेल अ ब्रीफ अबाउट इट और व्हाट डू यू नो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन कोन कहबो कहलो ठीक है सेति के तबरे हाँ synchronization of state election and national election in the same manner, same day, to minimize the cost, cost and also government allow government to do some more welfare activities to avoid the model conduct. Okay, and what else? Try करो समझते no simple question what do you know about one nation one election जेमिति तमे भाबुछ सेठी आंसर दबो ट्राई करो सेमति आंसर ओडिया हो इंग्लिश हो Go go I'm listening yes next
Continue. Yes. This one nation, one election bill has been proposed in mind. Motivation out of the constant election mode that it has been. Keeping that in view, there is provision to synchronize election at state and national level, and then it is the local elections. ठीक है ଆଉ କିଛି that's it. Okay, see, ମୁଁ जो क्वेश्चन पचारली what do you understand by one nation one election, सेम क्वेश्चन मेंस रे आसले केमिति आसे डिस्कस अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. ओके, आउ इंटरव्यू रे तो तुमको डिस्कस कहिबेनी, तुमको से पचार व्हाट डू यू नो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन. जस्ट गिव एन एग्जांपल. किछि पिलांकर आंसर थिला डिस्कस, किछि पिलांकर आंसर थिला व्हाट. रिमेंबर इन द मेंस एग्जामिनेशन जेतेबेले गोटे क्वेश्चन आसुची डिस्कस अबाउट वन नेशन वन इलेक्शंस, आमे हमको केमिति ट्रेन करिचे, इंट्रोडक्शन टिके दबा आउ सेई बिल विषय टिके डिटेल्स रे कहिबा, तार एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ए सब जिंस कहिबा. बेसिकली तमरो माइंडसेट ता सेमिति डेवलप हेची ए पर्यंत. बट इंटरव्यू रे सेमिति नुह. इंटरव्यू रे यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन. डू नॉट गिव एक्सग्रेशंस ऑफ द इंफॉर्मेशंस. तांको बोर करनी, से माने जेति की पचारछन तुमे सेति की आंसर दियो. If the question is related to what do you understand by one nation one election, you can say simply one nation one election is based on the principle of conducting elections simultaneously for the state assemblies as well as the national elections. Stop. Do not go beyond it. It is not mains examination. It is interview. Give them opportunity to ask questions. एठी क्वेश्चन तमे तार बेनिफिट कोन कोन हेतिला पचारु नाहंती. से माने सिंपली एया ही पचारुचंती कि व्हाट डू यू नो अबाउट इट. तुमे तो बहुत किछि जानिचो, बट तुमको सेठी रहिया को पड़ियो. यू हैव टू स्टॉप. टिके कहि देबो 1 2 3 2 to 3 sentences max. स्टॉप इट. लेट देम आस्क क्वेश्चन. सेवन जदि पचारिबे, ओके, आई मीन देयर इज अ रिसेंट पैनल ऑफ एक्स सीजीआईस हैव कमेंटेड ऑन वन नेशन वन इलेक्शन. Do you think that it is going to be successful? Now you are stuck. ମୁଁ କଣ କହିଲି, ପ୍ରଥମ क्वेश्चन व्हाट आसे, फॉलो अप क्वेश्चन गुडा साधारणतः व्हाई आसे. आ से व्हाई क्वेश्चन ता जदि तुम आंसर दे परिबो प्रॉपर्ली, बहुत बढ़िया से जीव तुम इंटरव्यू. नाउ putting forward the question to all of you. ए जदि क्वेश्चन आसे, what do you think, is it going to be successful? Tell me what should be your answer. को फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिल टा एटा पास हे जाइछि कि पास हे नहीं ना हिछि, ए बिल टा लॉ रे कन्वर्ट हेछि कि. ठीक अछि, को कोन कहिबा आंसर ठीक कहलो. जदि पचारा गला कि डू यू थिंक इज इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल और इज इट गोइंग टू बी इलेक्टेड. We cannot say it will be successful or failure, but trying everything will make the country make it. So we have to wait for the JPC as they are analyzing with more experts. So we have to wait for the JPC. And we will say after that, maybe it will be beneficial or it will be a disaster. Okay. बहुत माने with all due respect बहुत वेग आंसर हैला, but anyways thank you for trying. In the sense काहे कि मु कहिली ये जेनेरिक इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक अछि और तार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कम रहिला. ओके, ट्राई करो तार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टिके दबा पाए. से जेतल पचाउछंती व्हाई डू यू थिंक इज इट गोइंग टू बी सक्सेसफुल और इज इट गोइंग टू बी फेलियर, दैट मींस दे वांट यू टू असेस. ती असेसमेंट रो प्रश्न आसुची. ठीक अछि, बट एनीवे दैट हम सिखिबा जंस. आउ किछ आंसर. हां हां, सेमान तुमरो ओपिनियन पचाउछंती. जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी इज अ कॉन्टेक्स्ट. से माने तुमको गोटे कॉन्टेक्स्ट देले कि देयर आर रिसेंट जॉइंट पार्लियामेंटरी कमिटी किमा some of the CGI have commented on the certain loopholes related to the one nation one election. What do you think about it? Do you think it is going to be successful? Yes.
ना ना सेटा तुम्हें ओपिनियन तुम्हें निजर दबो हाँ हाँ it would be minimized by doing one time the national election and after 2.5 years or 3 years, it will be reduced. It will be lower the expenditure as well. It will address the model code of conduct of policy, police projects, which are often due to model code of conduct. And then disadvantages will be addressed. Go. So, sir, the first issue arises in the issue of federalism. So, we have to take the stakeholder approach, making all the state government in the same level and discuss how effectively we can imply one nation, one election. Secondly, the issue arises in the constitutional amendment. So, we have to ମାନେ proper ଆମେ କେମିତି ମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଧାରୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କେମିତି ହେବ ठीक अच्छे मु टिके तुमको टिके हेल्प करूची मते आंसर टा एमिति दियो जेमिति तांकू दबो although we are interacting now but try करो एमिति आंसर दबा पई जेमिति तुमे कोठू स्टार्ट करिवो देन कोन कहिवो यस ट्राई करो इट्स ओके हां को ट्राई करो हम्म ओके but the preliminary assessment that I would reach of its advantages and disadvantages would be for the most important advantage it would be reduce the burden on the exchequer. But it also has many challenges. For example, we need to work out the provision what if the government breaks and in between. What we need to do. But also there is another concept that I would like to add is there is a particular space, the state policy space and the union policy space. So there might be an overlap and we need to justify that as well. In that, I believe that it's a good strategy. okay ठीक अछि let me help you out in this सी तुमे जेतोळे से why what तो हमें कोन कहले कि one nation one election intends to do so and so diameter selection stop then when they ask you why similarly तमे कोन कहिवो you can start in this way since this one nation one election it is not approved finally by the parliament it is awaiting the final note however uh, there are certain issues which were raised by various political parties that makes the bill to be difficult. One of the most important issue which is time and again raised by certain political parties is related to the state autonomy. So some political party believes it is hijacking the federalism structure. And primarily when the state legislative assembly people have elected for the completely 5 years and with this provision one nation one election all of you know that there is a provision that when the simultaneous election is going to be conducted no matter how many days the government is being formed it is going to break down. So this is completely against the spirit of federalism. So it is not going to be an easy task because in a diverse country like India we have to take account of each and every state their political parties and other illuminaries. If there could be a mutual agreement how can this problem be addressed then perhaps it will be able to achieve its intended goal. There is also another issue that oversighting power of the election commission. By this provision of simultaneous elections election commission has got a lot of power. However there should be some oversighting mechanism to audit to control over the mandates of the election commissions. I feel you can say in this way I feel that a lot of debate discussions must be needed and the constitutionality angle also must be looking into it.
मेक ए बैलेंस ओपिनियन कौन कहले तुम दी चार्टा डिसएडवांटेज कहीं प्रथम तो से प्रश्न पचारे जदि से जिनसटा एत इजी होता तुमको प्रश्न ही पचार नथांते से प्रश्न एथि पचारे बिकज से चाहूँगी कि इश्यूटा गोटे दीटा इश्यू तो बहुत अच्छी बट सबुठ बड़ इश्यू हूँ स्टेट मानकर कंप्लेन कर रिलेटेड टू फेडरलिज्म ओके एबे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्स सीजीआई 4 जन से माने कौन कमेंट करछंती से माने कहिछंती जे इलेक्शन कमिशन रो सी जहाँ भी केमिति इलेक्शन करिवो कौन डेट फिक्स करिवो सेमान को ओवरसाइट करबा पे कौन पावर तैयारी कराइछि डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट तो पावर ओवरसाइट करि परिबोनी अल्टीमेटली इट इज द पार्लियामेंट केबा पार्लियामेंटरी कमिटी को दायित्व दबा कथा इलेक्शन कमिशन को रो पावर को ओवरसाइट करबा पे हु नोज दैट से माने मन इच्छा केमिति करिवेनी सो सीजीआई जो कहले एटा गोटे भलो डिसीजन बट देयर आर लूप होल्स देन यू स्टॉप इट आउ अधिक जीवा दरकार नहीं सिंपली स्टॉप कर दबो लेट देम आस्क फर्दर क्वेश्चंस गाड़ी बुझी पारछो जते जिंस गुडा को तमरो आईडिया या हवा दरकार डू नॉट गिव टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन तुमरो पाकर इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी आमे सिना ब्रीफली डिस्कस करे मु आई एम 110% श्योर दैट मु जब तुम कहबी कि तुम 5टा 10टा पॉइंट को इमिति पॉइंट कहया पे बहुत किछि अछि तुम पाखरे को अमेंडमेंट बिल तार नंबर केते लोकसभा रे कोन हैला को पॉलिटिकल पार्टी किए कोन कमेंट करचंती व्हाट आर द वे फॉरवर्ड तुम प्रोबेबली मैगजीन विभिन्न प्रकार पढ़ी थिबो सो एते गुडा तो तांको सामने रे कहि परिबे 2 to 3 मिनिट्स तुमको कोन कहया दरकार गोटे दिटा इशू हाइलाइट करिवो ओके सीजीआई कोन एक्स सीजीआई कोन कहछन तार गोटे इशू तुम हाइलाइट करलो तुमरो आंसर पूरा बैलेंस होबा दरकार ना बिल्कुल नो येस एंड नो रे तुम कहबा कथा नुह आ गोटे जिंस जेमति तुमे बारंबार पचारतले कि सर पर्सनल ओपिनियन यस पर्सनल ओपिनियन होबा कथा मु भी मोर ओपिनियन दउतली बट मोर ओपिनियन इज मोर बैलेंस ओपिनियन माय ओपिनियन इज नॉट ड्रिवन बाय इमोशन my opinion is not driven by the biasness which I like or which I don't like. Are you getting my point? That is the reason of personal opinion. एठी personal opinion कहिले कोन बुझाए कि तमे केते बैलेंस वे रे ताकू जज करि परछ ना कि मु मते एटा पसंद नुह कि मते एटा पसंद मु भाबुची न हेले भलो हो कि मु भाबुची हेई जाउ से जहा भी असुविधा हो सेटा इट इज सी व्हेन यू कोटिंग रिपोर्ट्स इज ओके भलो खराब नुह but if you rely too much on your report then eta eya भी show हुए that you are not able to take a decision तमे जदी बहुत मात्रा तमे गोटे कंक्लूजन को पहुंची पारु न लास्ट टाइम पे हेई छी बहुत पिलांग सहित से माने तम मुहरु चेष्टा करथिबे बाहर करिया पई कि तमरो डिसीजन कोन तमे तो कहला ये या कहिसंदी सी सेटा कहिसंदी ये कमिटी या कहला तमरो डिसीजन कोन व्हाट इज योर डिसीजन व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट क्वेश्चन सेटा ना कि क्वेश्चन रामनाथ कोविंद फॉर्मर प्रेसिडेंट सी कोन कहिसंदी क्वेश्चन सेटा नुह कोट करि परिबो खराब नुह किंतु कोटटा गोटे इमिति करनी जे जोटा शो हबो तम यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजन सो गोटे सिविल सर्वेंट को डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर सो यू हैव टू कम टू अ कंक्लूजन एंड ऑफ कोर्स कंक्लूजन कैन नॉट बी यस एंड नो एई भला टॉपिक रो यस नो किछि नाही बट गोटे बैलेंस वे रे तमे आकू एंड करि परिबो कंक्लूड करि परिबो ओके बुझियला गोटे एग्जांपल मु तुमको देखैली किछिटा टॉपिक्स मु लेखि थिली आजी आई डोंट नो वेदर आई विल गेट टाइम और नॉट बट एनीवेज कैन यू प्लीज नोट डाउन मु एठी लेखि दोछि नले गोटे होची मु आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटी एंड गवर्नेंस रिलेटेड अलगा अलगा टॉपिक आमे डिस्कस करिबा गोटे तो सबुठ बड़ नेशन वन इलेक्शन ये होची गोटे टॉपिक आ गोटे सेकेंड होची बिहार इलेक्शन आउ बिहार इलेक्शन रे मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर आसीबो आधार आधार एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ओके थर्ड होची यूएस रो सैंक्शंस और टैरिफ्स and impact on India. Impact on India. Fourth होची recently हमरो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी काली आस्तिले सी गोटे किछिटा कथा उठै चंदी से गोटा भी बहुत गुरुत्वपूर्ण कोन से कहि चंदी ओडिसा रे भी कास्ट बेस्ड सेंसस होबा दरकार कास्ट बेस्ड सेंसस
these are high yield topic, expected questions achi. Fifth point, को yes notify କରିଛନ୍ତି but if you look at the government notification ତା ଭିତରେ ହିଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କର କହିବାର ହଉଛି କି ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ କେବଳ କାଷ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ହିଁ ରହୁ ଏମିତି ହଉଛି ନର୍ମାଲ ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ତମେ ସବୁ କିଛି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା ଏବେ ସେନ୍ସସ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଛନ୍ତି ଆଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେନ୍ସସ୍ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ରହୁ ଆଉ କାଷ୍ଟ ସେନ୍ସସ୍ ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ ଓନ୍ଲି ଫର ଦ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ହବା ଦରକାର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଆ ଓକେ ଏନିୱେଜ୍ ସି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ସେନ୍ସସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି atrocities against women especially ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରିଲେଟେଡ କହୁଛି এটা আমি কালি ବି I think କାଲି ନା ପହରଦିନ ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲେ atrocities against women in Odisha okay ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅ just Odisha thank you online ରେ ଅବିନାଶ ଅମ୍ବିକା ଶୁଭଶ୍ରୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଛ थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ did you write ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଲେଖି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ତୁମର ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା या रिलेटेड कौन आसीबो क्वेश्चन प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ ओडिशा व्हाट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इश्यूज कहीं कि ओडिशा रे मैन्युफैक्चरिंग हब हेई पारुनी आ गोटे होची तुमरो सात आ गोटे पॉइंट हबो ट्राइबल प्रोटेस्ट against mining आ गोटे सब इंपोर्टेंट मु भाबुची ओडिशा rich in natural resources still one of poor state as considered ओके एगुड़ा केवल किछिटा ही टॉपिक आई विल गिव यू अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट टू इनिशिएट द डिस्कशन किछिटा ही टॉपिक अछि मु पुनी पढी दउची टॉपिक गुडा गोटे वन नेशन वन इलेक्शन एबे आज ही टॉपिक बाहरी छे आ एईटा मु तुमको कोन कहितली काली ना पर दिन कि दुई टाइप रो करंट अफेयर्स एमिति किछि करंट अफेयर्स जोटा लास्ट 2 इयर्स भी चली थिबो बट तांकर इंपैक्ट एते अधिक जति वन नेशन वन इलेक्शन सब बेले इंपोर्टेंट बट किछि किछि करंट अफेयर्स तुमको लास्ट 3 मास रे कोन हेछि सेति ही पढि कि जाओ ओके आ मोस्ट इंपोर्टेंट सेही मास कोन हेछि बिहार इलेक्शन रे इलेक्शन ऊपर इंपोर्टेंट नुह अधिक इंपोर्टेंट बिहार रे कोन हेछि आधार कार्ड को सिटीजनशिप रो मान्यता रूपे दिया जाय नाही ओके तो से रिलेटेड गोटे बहुत जोर कंट्रोवर्सी चली कि आधार कार्ड आमर ओडिशा रे जतले इलेक्शन होइतिला आधार कार्ड टा एज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट हिसाब रे देखाइतिला बट बिहार रे से जिंसटा इलेक्शन कमिशन नोटिफाई करिछि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल अलगा किछि डॉक्यूमेंट ताको दरकार ओके तो से क्षेत्र रे व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट बहुत कंट्रोवर्सी अछि बट तुमको एटा बुझियो तुम जदि हां सर आधार कार्ड जस्ट बिकॉज ओडिशा रे आधार कार्ड वाज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन बिहार आल्सो इट शुड बी एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट देन यू डिड नॉट अंडरस्टैंड द इश्यू तुम इश्यू ही बुझी न एटी ताले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि काहे की इलेक्शन कमिशन आधार कार्ड टा को नोटिफाई करेनी टू कर्ब द इलीगल इमिग्रेंट्स स्पेशली बांग्लादेशीज रोहिंग्यास एटसेट्रा बुझी परछो एंड इलीगली जो माने रहुचंती ताकू आइडेंटिफाई करिबा ताकू कर्ब करिबा जेहेतु
ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଧାର କାର୍ଡ ସେମାନେ acquire କରିଛନ୍ତି. So that is one of the majority reason why election commission decide kale that Aadhaar should not be one of the notified. Maybe সেটা change ହେଇପାରେ, who knows, election हवा पूर्व मे भी notify करि पारंते, we don't know that, but एबे जहा condition आमे ताकू नै कि prepare हबा. बिल्कुल एमती कहिबे त जे नाही आधार कार्ड, हाँ आधार कार्ड सर हवा कथा. हाँ हम्म हम्म ठीक अछि ठीक अछि ना पड़िबो जे पुणी ताको पिटिशन फाइल करबो. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देइचंती, दैट आल्सो कैन बी फर्दर चैलेंज. सो अछि बहुत जिंस अछि ता भितरे. सो आमे एठी कोन जानले कि तमे इश्यू टाको बुझिया पड़िबो एठी. आ गोटे देखो, यूएस सैंक्शंस टैरिफ्स एंड इंपैक्ट ऑन इंडिया. यूएस कौन करुछि विभिन्न प्रकार टैरिफ वर्तमान सैंक्शन करुछि. मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट गिवन बाय गोटे साइड रे कौन कहउछि, वी आर वेरी क्लोज टू मेक अ वेरी प्रोबेबली अ गुड डील. डोनाल्ड ट्रम्प को स्टेटमेंट तो तुम सुनिछ समस्ते. को टाइप रो ताको क्रेडिट नवा को बहुत भल लागे ना कि से जहां भी हो से कहै मु करछि मते तमे वाव करो, मु आई विल बी हैप्पी. गोटे साइड रे से कहउछन जे we made a very final deal with China, we are going to make a big deal with India. आ गोटे पटे कहउछंती कि all the BRICS nations who are going to undermine the value of the dollar is treated as anti-American policies and will be slapped with additional 10% of the tariff. But India is one of the member of the BRICS, founding member of the BRICS मु कहिबी. सो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से क्षेत्र में तुमको पचारि पारंती. ओके, ट्रम्प करा कहबन जे सर ट्रम्प पागल गोटे, ताको से समय कहबन, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, सीए इज वेरी क्लेवर. तुम देखि दियो तांकर स्टेटमेंट. हैव यू ऑब्जर्व एवर one of the thing which I like about Trump, despite all the negative thing, he knows how to manipulate. से जो आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ताको बहुत बढ़िया जଣା अछि. जदि इंडियन रो हेड ऑफ द स्टेट थिबे ताको ओके योर प्राइम मिनिस्टर इज ग्रेट, सीए तो मोठू भी ग्रेट, ओके ताको उठेई देले. पूरा भारत रो मीडिया रे प्रचार प्रसार चले कि नहीं ट्रम्प कहले जे निजठू भी हमरो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ग्रेट. बट से सार्कास्टिकली कहिसंती कि से कामटा हासिल करिया पे कहिसंती, सेई जिंस के बुझंतेनी. त नेक्स्ट देखो पाकिस्तान सहित आ तुमे विल बी सरप्राइज्ड. आमे तो मु भीतर को जीवा पे चाहूनी. रिसेंटली तुम शुणिथिबो जे बिटकॉइन रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड पाकिस्तान को हेछि की करछि. डोनाल्ड ट्रम्प को पुओ ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करिछि. भूल सुधा यूएस केबे भी पाकिस्तान रो एगेंस्ट जीवनी. प्लस चाइना को बैलेंस करबा सी भी गोटे यूएस रो मु कहिबी धारणा. ओके, एनीवेज एटा लॉन्ग डिस्कशन हबो. कास्ट बेस्ड सेंसस मु कहली, कास्ट बेस्ड सेंसस रिलेटेड कौन इश्यूज अछि, करबा कथा कि नुह. जेतोले कास्ट बेस्ड सेंसस कहूचे बहुत सारा इश्यूज तुमरे आसीबो. गोटे जो ओबीसी रो इश्यूज आसीरा, क्रिमी नॉन क्रिमिनल. सेकंड इश्यू जे आमे ए जो क्रिमी एंड नॉन क्रिमी रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट भी रिसेंटली गोटे हाइलाइट करथिले. यस, एससी एसटी रे एटा इंक्लूड करबा दरकार कि करबा दरकार नुह. गवर्नमेंट मना करछि, बट सुप्रीम कोर्ट इज एन ओपिनियन फॉर काहे कि कोन हबो सेटा करिले. ओके, आ गोटे रहिला तमरो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, या रिलेटेड भी कि आमे कास्ट बेस रु आमे ओवरकम करके एटा को क्लास बेस्ड करबा दरकार कि. सो विभिन्न प्रकार कास्ट बेस्ड सेंसस हेले हबो कोन अल्टीमेटली तुमको जना पड़ला जे एई राज्य रे कि हम भारत रे एति कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन अनरिजर्व कैटेगरी रे अछंती, एति कि पॉपुलेशन ओबीसी, एति कि पॉपुलेशन या, देन व्हाट यू कैन डू, पॉलिसी शुड बी मेड, राइट. तो ट्राई करो, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव इश्यूज. एवडा माने सिंपल इश्यूज नो जे तमे फट करी कि छोटा आंसर दे देबो. आ तुमर आंसर बिकॉज तुमे को कास्ट रो बिलोंग करूचो, फॉर एग्जांपल जने जनरल कास्ट रो बिलोंग करूची ताकू जदी कुहा जिवो एससी एसटी को विषय किसी कमेंट दियो, जदी तमे एगेंस्ट रे कहिलो बहुत बायसनेस शो करे. आ जदी तमे एससी एसटी रो बिलोंग करूचो, तमे कहउचो नाही बहुत एक्सेसिवली फॉर रे कहउचो, देन प्रोबेबली तमे या फील करचो नाही you want that general category people to be failed. So opinion जेहेतु तमे civil servant हबो should be balanced in a way. हाँ हम्म
is no, but the past people are placed from the general Brahmins. ଯଦି ଆମେ କିଛି ନେଗେଟିଭଲି ଆମେ ବାୟସଲି କହିଦେବା ଯେ ନାଇଁ ଇକୋନୋମିକ କ୍ରାଇଟେରିଆ is not should not be used, should be based No, you cannot say that. not. How can you say that? Supreme Court nije କହିଛନ୍ତି economic weaker section ro quota hochi valid. You cannot make a statement against a judgment of the Supreme Court. Okay, प्रथम जिनस there is no caste based reservation. Remember, ये होची स्पोकन कथा, ये होची न्यूज चैनल. संविधान हमको को रिजर्वेशन गारंटी करिछि को बेस रे? सोशली एंड नो, इकोनॉमिकली नहीं, एजुकेशनली. संविधान रे केवल दुईटा ग्राउंड अछि जहा बेसिस रे रिजर्वेशन दिया जाई परिबो. सोशली बैकवर्ड, एजुकेशनल बैकवर्ड. कास्ट सोशली अंडर रे आसुची, सो देयर इज नो रिजर्वेशन ऑफ कास्ट, इट इज रिजर्वेशन ऑफ सोशली बैकवर्डनेस. गोटे पर्टिकुलर कास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ सेमानकर कास्ट स्ट्रक्चर पाई सेमाने सोसाइटी रे बहुत बैकवर्ड हेगी अछंती, सेथि पई ताको रिजर्वेशन दिया जाउची. ये क्लैरिटी तो माइंड रे रहिबा दरकार. भूले सुला कोहर जे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, इट कास्ट इज लिंक्ड टू द सोसाइटी. ठीक अछि. तो और इकोनॉमिकल बेस तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करिसंती. Yes, you cannot go against. There are multiple factors. जो माने सोशली आज भी बैकवर्ड अछंती तांको आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी होची मेन स्ट्रीम को नहीं आसीबा, केमिति आनिबा, ओनली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन. हां, बट हां, देयर आर रिफॉर्म्स नीडेड. तमे केबे भी मना करिबन जे ना रिजर्वेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, बट एया भी देखा जाय जे मिसयूज होची रिजर्वेशंस पॉलिसी को. तो देयर इज अ नीड ऑफ रिफॉर्म्स रिलेटेड टू रिजर्वेशन. जेमते क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर रही गला, गोटे रिफॉर्म हमें करि परिबा, बट इमीडिएटली हमें एससी एसटी को इंपैक्ट करि परिबानी. स्पेशली शेड्यूल्ड ट्राइब्स माने जो माने रहुचंती, शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू द ओबीसी एंड शेड्यूल्ड कास्ट. तो तांको हमें क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर ओनली बेस्ड ऑन द इकोनॉमिकल स्टेटस इज नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट. तो ये गोटे बहुत बड़ इश्यू, बहुत बड़ डिस्कशन दरकार. या ऊपर एई भली करिकि तमे एंड करिवो टॉपिक टा, कहि देबन जे नाही हां दरकार केवल क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर जदि करिदेले सॉल्यूशन हे जिवो कि. बहुत कथा केवल केवल हिस्टोरिकल नुह, करंट एस्पेक्ट को भी हमको कौन करिया पड़ियो, कंसीडर करिया पड़ियो. केवल गवर्नमेंट रो सेक्टर में ही रिजर्वेशन का अछि. हां, प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब गुडा दिया जाय सेथे रिजर्वेशन है. सेथे हमर जो ट्राइबल हो कि लोअर कास्ट जो माने से माने को सेथे 70% जॉब मिलनो ही नहीं, सेटा बहुत लो अछि. no, again it is debatable, my dear, because private sector is based on the merit and talent. बुझी परछो. तो हमें जदि प्राइवेट मेरिट अगेन कहू, मु आई एम नॉट अगेंस्ट रिजर्वेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, नॉट इन द फॉर. तुमरो आंसर भी से हवा दरकार. तुम एया कहबन जे नाही प्राइवेट सेक्टर रे रिजर्वेशन हवा कथा नुह कि हवा कथा. यू शुड ऑलवेज मेक अ बैलेंस ओपिनियन. ओके, जा तुमरो पर्सनल ओपिनियन जहां भी थाओ. प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा में कर्नाटक में 79%. डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन दरकार. अगेन एटा हमें इट कैनॉट बी आंसर इन यस और नो. सी, प्राइवेट सेक्टर इज बेस्ड ऑन मेरिट. अगेन तमे याकू ही स्टिक करिवो. केडी मा पॉइंट. जदि प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट होची समस्ते प्रोबेबली एवरीबॉडी वांट्स अ कट ऑफ दैट, बट व्हेन द प्राइवेट कंपनी मेक्स अ लॉस, government has no role to compensate those private companies. So if we want our economy to grow, we need right kind of resources, and if you make or control the companies, then they may not make a lot of profit, hence our economy will suffer. And सेटा तो exactly हमारा problem हेतिला before 1991 LPG reforms. बुझी परछो कि बहुत कंट्रोल हेतिला प्राइवेट कंपनी. सो प्राइवेट कंपनी शुड बी लेफ्ट लिबरल. They should be having a lot of opportunity to decide the rules and regulations for their own companies. Remember, तो आंसर टाको टिके ब्लेंड करिवो, बट मना भी करदबन जे रिजर्वेशन टा न हो. So there is again wider discussion is needed. और एई टाइप रो तमे आको टिके कहिबन जे नाही रिजर्वेशन बिल्कुल न हो, बट wider discussion is needed. आज का डेट रे you have to understand the problem. Let's say आमे कहू जे जेमति फॉर एग्जांपल यू मेंशन एससी एसटी कैटेगरी प्राइवेट सेक्टर रे
एते अधिक नाहांती कोन पाई नाहांती if you look at the root cause analysis it is not because of the private sector it is because they are socially educational backward जदि से मानको socially educationally स्कूल समय रो छुआ बेलो जदि तांको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली थांता प्रॉपर एनवायरनमेंट मिली थांता प्रॉपर एजुकेशन मिली थांता तल सी गोटे भलो टैलेंट हमें प्रोड्यूस करि पार थांते हाँ सो प्राइवेट कंपनी रे रिजर्वेशन भर्ती करते के सॉल्यूशन हबनी बुझी पारछ ना सो रिजर्वेशन आउ आमे सोशियली को अपलिफ्ट करिवा पई हमको छुआ बेलु ही सेटा करिया को पड़िबो आमे गोटे एंड रे ताको करि परिबानी सो एई टाइप रो तमे सब बेले मन रखो मैच्योर्ड डिसीजन मैच्योर्ड टाइप रो आंसर तमे दवा पेंट के ट्राई करो एट्रोसिटीज अगेंस्ट वुमेन ओडिसा रे बहुत खराब अवस्था परिस्थिति आउ मु गोटे दिटा एग्जांपल भी देइथले ता ऊपर तमे किछटा रिपोर्ट ये करो उत्कर्ष ओडिसा ओके आमे हमरो ऑनरेबल सीएम विभिन्न प्रकार मु कहिबी स्कीम्स आणुछन्ते उत्कर्ष ओडिसा बट स्टिल कौन पाई मैन्युफैक्चरिंग हमर एटी हेई पारुनी ओके दिस इज आल्सो लिंक्ड ओडिसा इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस येट इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द पुअर स्टेट व्हाई इज इट दैट सो कौन पाई आमे गोटे भलो बिजनेस एनवायरनमेंट तैयारी करि पारुनी कौन पाई आमे बड़ बड़ कंपनी गुडा को एफडीआई आनी पारुनी गवर्नमेंट चाहे करि परिबो आउरी ट्विक करि परिबो रूल्स रेगुलेशन आउरी लिबरल करि परिबो कोन पे हमें करि पारुनी सो ए सब दीज आर ऑल ओपिनियन एंड थॉट प्रोवोकिंग बेस्ड क्वेश्चंस ओके मु किछिटा खाली सैंपल देछि तुमान को माय रिक्वेस्ट वुड बी काइंडली प्रिपेयर ऑन दिस टॉपिक्स यार इन करंट अफेयर्स रिलेटेड गोटे डॉक्यूमेंट इन प्रोग्रेस अछि वंस इट इज रेडी बहुत जल्दी मु तुमान सहित सेटा शेयर करिवे जो थी कि तुमे पॉलिटी static with current affairs economy static with current affairs geography or environment static with current affairs but again mu तुमको पुनी रिमाइंड करिया पे चाहूची current affairs and subject specific is not end of the interview max to max 15-20% max मु कहिबी यार होची वेटेज और सी भी डिपेंड करे तमर जदी CIF blank अछि then probability of getting questions from current affairs is more if your CIF is filled especially work experience and hobbies or maybe you have done certain courses which are extraordinary okay normal course ko chhadi ki somebody has done certain maybe foreign policies masters in foreign policies or maybe diplomatics or maybe social issues then questions may be on that so tomoro CIF ku nei ki hi tomoro questions asibo all right so next ame jebe class kariba again mu ho kiba au ki honto whenever they are going to conduct classes they will conduct or start classes based on specific topics in the meantime mu agote be document dekhauchi joda already prepare he gachi let me show you so ethi dekho tomorrow ei bholi a pdf tomorrow application upload he gachi mock interview based question approximately ye hochi tomorrow polity and governance related okay केतरा क्वेश्चन मु देखौची 6टा पेज अछि तुमरो तुमे कोन करिवो केवल पढी चलो क्वेश्चंस पाखा पाखे 200टा खंडे क्वेश्चन अछि आ मते का लागुनी 200टा क्वेश्चन बाहर किछि जदि बा पचारे आई अंडरस्टैंड यू विल बी एबल टू टैकल फॉर एग्जांपल कैन यू डिस्कस द ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर डिस्प्यूट व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म हाउ डज इट इंपैक्ट डेमोक्रेसी डू यू थिंक ब्यूरोक्रेट्स आर मोर लाइक लीडर्स और मैनेजर्स these are not mains questions these are interview specific questions why is government considering legislations on the triple talaq issue despite the Supreme Court not mandating how does the Indian Evidence Act handle evidence from lie detector test and so can you explain the special category status and the states requesting for it Andhra Pradesh in the request karthila okay what do you understand by the term cooperative competitive federalism गोजरे एई सब आसीबो क्वेश्चन तो तमर एटा ऑलरेडी बना है 200टा खंडे क्वेश्चन अछि तुमर ऐप रे मु अपलोड कर देबी तमर केवल काम जस्ट पढी चला मु जानि छी यार आंसर तम पाखरे अछि एमि दिन जे तमे मेंस रे पढिनो पढिचो किंतु क्वेश्चन जेमिति पचार है तमे ट्राई कर आंसर दबा निजे निजो को आंसर दियो कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंटरी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेसिक क्वेश्चन भी पचारंते से माने केबे केबे हाउ कैन टेक्नोलॉजी बी यूज्ड टू अचीव द मैक्सिमम गवर्नेंस जो माने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पाठ पढ़िथिबे अगेन क्वेश्चन विल बी क्यूरेटेड अकॉर्डिंगली जो माने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड थिबो स्पेशली सॉफ्टवेयर इंजीनियर जदि थिबे से माने एई भला क्वेश्चन पचारिबे टेक्नोलॉजी केमिति गवर्नेंस रे यूज करा हबो ओके
What are the pros and cons of holding simultaneous elections? Why has the appointment of Lokpal been delayed? What are the new provisions for resolving interstate water dispute? Can you list any interstate disputes involving Karnataka? जेमिति मु फ्रेम करिछि क्वेश्चन टा सेही भली तमे आंसर दियो निजुको जस्ट सिंपल वर्ड्स रे कैन यू डू दैट ओके पाखा पाखी 200 टा क्वेश्चन अछि जस्ट पढो क्वेश्चन गुडा खाली पढो तम माइंड रे ऑटोमेटिक आसीबो आंसर मु सेति कॉन्फिडेंट अछि ए क्वेश्चन नो आंसर तुमको लिखिया दरकार नै केवल पढो आ पढी की जदी पारिबो डिस्कस करो गोटे ग्रुप बनाई दियो ऑनलाइन हो कि ऑफलाइन हो आ डिस्कशन नॉट बाय टेक्स्ट मु डे 1 क्लास नंबर 1 रे ही मु कहि छी आमे सब कोन होए सोशल मीडिया के जो टेलीग्राम ग्रुप रे आमे गोटे गोटे वारियर हे जाऊ आमे भाबू जे आमे निजे पीएचडी कर दीजे सब ये रे टेक्स्ट बेस्ड डिस्कशन करो नाही मु बारंबार कहू छी जदी पारिबो ताले ऑडियो बेस्ड एटलीस्ट डिस्कशन करो टेक्स्ट तो किए भी कोन भी उठे कि से कहि पारिबो मैटर एटा न हो जे तमे केते लिखि परजो मैटर एटा जे तमे कहि पारुचो कि नाही से जिंसटा को सो फॉर्म ए ग्रुप मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करो वीडियो कॉल हो कि तुमरो जहां भी जहां को तमे कनेक्ट करि पारुचो कि टेलीग्राम ग्रुप हो ट्राई करो ऑडियो वीडियो और फिजिकल टेक्स्ट बेस्ड अवॉइड करो टेक्स्ट बेस्ड दरकार नहीं बिल्कुल भी ठीक अच्छे सो ये हूँ तुम ऑलरेडी डॉक्यूमेंट 200 अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस जहाँ जहाँ दरकार सो तुम समस्ते या गो थ्रू कर ओके ऑलराइट